Assalamualaikum, welcome back. If you're new to this channel, then hi, I'm Sara from SARA MEER.com. I'm a mother and an IT graduate with a passion for improving the quality of education in Pakistan. This video is part of the video series जो कि मैं किफ़ायत की प्री प्राइमरी करिकुलम सिलेबस पे बना रही हूँ. आज की वीडियो में हम किफ़ायत के नर्सरी लेवल को डिस्कस करेंगे. अगर आप इससे पिछली क्लास यानी कि प्ले ग्रुप लेवल कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी लेवल इन किफ़ायत में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डिटेल वीडियो चैनल पे पहले से मौजूद है. आई विल लिंक दैट वीडियो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. ओके, सो लेट अस बिगिन विद अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ जूनियर इन्फेंट्स करिकुलम commonly known as the class nursery. किफ़ायत ने इसको junior infants का नाम दिया है. So in junior infants or class nursery, the subjects that we will cover are Urdu, Math, Islamiat and English. इस वीडियो में हम इंग्लिश को कवर नहीं करेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो है. द लिंक टू दैट इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. द रीजन फॉर मेकिंग ए सेपरेट वीडियो फॉर इंग्लिश इज बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट आई शो यू गाइज एवरीथिंग सो you guys can decide with confidence if this curriculum best fits your teaching style. So let us begin with our first book in junior infants, which is Urdu. Kifayat Summary Urdu Silsila is my all-time favorite series. This one is called Keyla. इसमें दो books हैं, Darsi and Amli. Darsi is the main book. It will be covering all the alphabets of Urdu, their sounds, their formation, their shapes in a very fun and engaging way. जबकि Amli is purely for writing purposes. So you can say it is more like a standard book for tracing letters and coloring. But it complements the Darsi perfectly. जो letters की formation बच्चा Darsi में सीखेगा उसकी फिर वो और ज़्यादा practice Amli में करता है. So this will reinforce the letter formation skills. So let me flip through some pages so you guys will have a clear view of what I'm talking about. This is the cover page. Keyla हिस्सा अव्वल पहला Darsi This is तारुफ. This is so useful, so don't forget to take a screenshot of this, especially ये highlighted part ज़रूर पढ़िएगा. These tips that Kifayat provides alongside will save you a lot of time searching on the internet for ways to engage a child. इन टिप्स में वो सब एक्टिविटीज़ मेंशन हैं जो कि एक लेसन को बच्चे के लिए इंटरैक्टिव बना सकती है. तारुफ के बाद डायरेक्टली लेसन शुरू हो जाता है. द बिग बोल्ड लेटर्स आर जस्ट द राइट साइज फॉर द यंग रीडर्स. द पिक्चर्स illustrations आर सो विजुअली अपीलिंग. इट रियली जस्ट मेक्स द होल लर्निंग एक्सपीरियंस डिलाइटफुल फॉर द चाइल्ड. बच्चा लेटर की फॉर्मेशन भी सीखता है, उनकी आवाज़ें, वोकैबुलरी बिल्ड होती है. व्हेन ही रिपीट्स विद द टीचर अंडा, उंगली, अखबार, ऊन. So there's a wide variety of vocabulary with each sound, expanding the child's vocabulary while they learn the formation of letters. So basically it is a complete package for language development. अगर आपने कभी बच्चे को beginning sounds यानी कि किसी भी पिक्चर की या किसी भी चीज़ की शुरू की आवाज़ सिखाई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि it is very tricky for the child to understand this concept. And I'm so glad that Kifayat had made each page carefully crafted with various activities that are focusing on the beginning sounds. So they're not only focused on the formation of the letters यानी कि letter को लिखना कैसे है. There are so many engaging activities that are focused on the beginning sounds. For example, ये वाला पेज जिसमें शुरू की आवाज़ सिखाई जा रही है. Read the instructions on the bottom of the page. It says तस्वीरों के नाम बुलंद आवाज़ से पहले खुद पढ़िए. तो आपने तरबूज से शुरू करना है एंड देन उसके बाद आपने सारे वर्ड्स पहले खुद पढ़ने हैं. बच्चा आपके साथ रिपीट भी कर सकता है. इस तरह से उसकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होती है कि इन सब चीज़ों को उर्दू में क्या कहते हैं. एंड देन यू विल गो बैक टू द टॉप अगेन फ्रॉम तरबूज एंड देन आपने अगली इंस्ट्रक्शंस बच्चे को बतानी है. यानी कि आपने बच्चे को बोलना है कि इसमें से जो जो पिक्चर्स तेज से शुरू हो रही हैं उस पर आपने टिक लगाते जाना है एंड जो जो पिक्चर्स तेज से नहीं शुरू हो रही उन पर आप क्रॉस लगाते जाओ. सो ये जो एक्टिविटी है जिसमें बच्चा टिक एंड क्रॉस लगाता है ये इटसेल्फ इज़ रियली फन फॉर द किड्स एंड ट्रैक का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. इसी तरह के फिर आगे काफ़ी सारे अटेंशन ग्रैबिंग पेजेस आते हैं फॉर बिगिनिंग साउंड्स प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल एक जैसी आवाज़ वाली तस्वीर मिलवाइए, डाल वाली तस्वीरों को डायनासोर से मिलवाइए, तस्वीरों के दुरुस्त हर्फ वाले खाने में रंग भरिए.
And this one was my absolute favorite one. Read the instructions on the bottom of the page. So this was after learning the letter गाफ. जब बच्चा गाफ पढ़ लेता है, उसकी वोकेबलरी सीख लेता है, उसकी फॉर्मेशन सीख लेता है, उसके बाद ये बिगिनिंग साउंड वाली एक्टिविटी वाला पेज होता है. तो इसमें बड़ा मज़े का है कि टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती जाएगी एंड उसके हाथ में पेंसिल होगी एंड देन उस हिसाब से वो ट्रैक पे फॉलो करता जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल द टीचर विल से गाड़ी में बैठकर गधे तक जाइए. अब बच्चा गाड़ी पे पेंसिल रखेगा एंड देन ही इज गोना लुक फॉर गधा. ठीक है, अब वो गधे को ढूंढेगा, गधा कहाँ है. अगर उसको नहीं पता तो इस तरह से उसकी वोकेबलरी बिल्ड होगी. जब टीचर उसको बताएंगे कि डंकी को गधा कहते हैं, ठीक है, फिर वो जाएगा गधे तक. जब वो वहाँ पे रुक जाएगा आके, देन फिर उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी गधे और गाय को साथ लेकर गुलहरी के पास जाइए. ठीक है, इस तरह से अगेन अगर उसको नहीं पता कि गाय क्या होती है, गुलहरी क्या होती है, देन टीचर विल हेल्प हिम कि इट इज़ द काउ और द स्क्विरल. ठीक है, इस तरह से वो पेंसिल पहले गाय के पास लेके जाएगा ट्रैक पे एंड देन ही विल मूव टू गुलहरी. ठीक है, देन द लास्ट इंस्ट्रक्शन विल बी फिर सबको साथ लेकर गेंद ले लीजिए. सो दिस इज़ अ रियली फन वे. आई हैवंट सीन इन एनी बुक्स इस तरह की क्रिएटिव activity to teach children beginning sounds. So you guys must have noticed the importance of these tiny tips and instructions at the bottom of the page. It's like having a personal mentor right there with you. These instructions serve as the perfect guide for parents and for teachers, providing you guys with tips on how you can support and facilitate your children in this learning process. Lastly, Keyla Darsi also introduces children to bhari awazein, heavy sounds. This will be helping them in building vocabulary and correct pronunciation skills. Okay, so let me flip through very briefly of Keyla Amli Qaida. This is the cover page and the Tarif page. Great tips, take a screenshot. Starting with rewriting skills, नुक्ता बनाने की मश्क, great tips at the bottom, दाएं से बाएं लिखने की मश्क, ऊपर से नीचे निश्त गोलाई बनाने की मश्क, and many more like these. Then starts the letter formation practice as this complements the दरसी कायदा. तो जब बच्चा दरसी कायदे में अलिफ का चैप्टर कर लेगा, फिर इस अमली कायदे में अलिफ की ओ लिखने की प्रैक्टिस करेगा. And this then continues for all the letters. That was it for Urdu. Now let's begin with our math. मैथ को किफ़ायत ने किंडर मैथ स्टार्स का नाम दिया है. दिस इज़ अगेन द जूनियर इन्फेंट लेवल, यानी कि क्लास नर्सरी का मैथ है. इसमें 4 बुक्स हैं, 2 टेक्स्ट बुक्स हैं एंड 2 वर्क बुक्स हैं. सो वट एवर कॉन्सेप्ट द चाइल्ड विल लर्न इन दी टेक्स्ट बुक्स, उसको री इन्फोर्स करेगा और ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करेगा इन दी वर्क बुक्स. सो देयर इज़ पार्ट 1 एंड देयर इज़ पार्ट 2. इसी तरह से पार्ट 1 की वर्क बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वर्क बुक है पार्ट 2. सो पार्ट 1 बेसिकली अगर साल में 2 सेमेस्टर्स हैं तो पहले सेमेस्टर में पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा एंड सेकेंड में पार्ट 2. These are the table of contents. Take a screenshot of these so you guys will have an idea कि पार्ट 1 में कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, पार्ट 2 में कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं. सो दिस सीरीज Kinder Math Stars have taken a unique approach to teaching mathematics. These books have incorporated the renowned German teaching pedagogy. इसीलिए book के cover pages पे you guys will see on the side Oldenburg, Germany. It's because they are utilizing the German teaching pedagogy to teach and develop number sense and numeration in young children. एंड इस अप्रोच के ज़रिए नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. 3 trucks, 3 fish. ओके, सो आई नो कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, बट इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशंस मैं आपको दिखाऊंगी दैट मेक्स किंडर मैथ स्टार्स सीरीज स्टैंड आउट. द डाइस थ्रू फिंगर्स, थ्रू टैली स्टिक्स and through 10 frames. So why am I so excited about all of these number representations? It's because I have used all of these in my extremely expensive international curriculums. So when I saw Kifayat bringing all of these international standards in our local books at a local price, I was very happy because now I can direct you guys to something that is not only affordable but is also following the same international standards that I have followed in my international curriculums. So anyways, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस variety of number representation से होगा क्या? By exploring these representations, children will develop mental mapping skills.
Google it. It is super important these days. Everyone is talking about mental math strategies, and this is how you begin. It's going to give a deeper understanding of numbers. So I'm going to flip through some pages and show you guys how the book progresses. So नंबर शुरू करने से पहले बहुत सारी engaging activities हैं जो बच्चे की cognitive thinking abilities को enhance करती हैं. For instance, teaching one-to-one correspondence exercises, recognizing patterns. Mathematics में patterns की बहुत importance है. Children learn to make predictions and make logical connections. There are many activities on patterns in the book. Then we have find the twins. This is teaching the concept of grouping of similar objects. Match the halves where you match each figure with its other half. Recognizing sizes by circling the same as the given picture, circle the odd one out and so on. All of these activities encourages children to think critically, analyze patterns and solve problems, thus building a strong foundation for mathematical concepts. The book also introduces shapes along the way. Have the child trace a shape with finger in sand, sugar or flour. Also make the lesson interactive by having the kids look around for similar shaped objects. Then we have some more emphasis on one-to-one mapping. इसके बाद फिर नंबर्स सिखाना शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद नंबर 1 एंड जैसे कि मैंने पहले बताया नंबर्स को सिखाने के लिए मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल होगा थ्रू डाइस थ्रू टेली स्टिक्स एंड फिंगर्स द नंबर्स आर आल्सो हिडन इन पिक्चर्स टू एंगेज द चाइल्ड इवन मोर. So part 1 may we have numbers from 1 to 7 along with all the other mathematical concepts that we talked about, and part 2 may we have numbers from 7 to 10 along with some other mathematical concepts like Students will be able to recognize and differentiate between big and small objects or tall and short objects, increasing visual skills and logic. Here we have got recognizing patterns and recognizing sequence. The book also introduces the concept of directions and positions, up or down concept. Some fun pages like connect the dots and also a color coding activity to engage the child in meaningful learning. The child will also be learning number names from 1 to 10. So by the end of the book, the child will know the spellings of numbers from 1 to 10. Now you might wonder why the book sticks to numbers only up to 10. Well, 3.5 से 4.5 साल के बच्चे के लिए strengthening their understanding of numbers up to 10 is crucial for their future mathematical development. This is going to lay the groundwork for more complex concepts as they progress in their learning journey. Lastly, each book in this series is accompanied by a separate workbook. This will provide children with ample opportunities to practice and reinforce the concepts that they have learned in the textbook. These workbooks act as a valuable resource for independent learning and further consolidation of mathematical concepts. So अगर आप एक comprehensive math resource चाह रहे हैं छोटे बच्चों के लिए तो Kinder Math Stars series for junior infants 1 and 2 is an excellent choice. इसकी जो German teaching pedagogy की incorporation है with activities जो cognitive thinking को promote करती हैं और extra practice के लिए an equally engaging workbook. It's just a perfect tool to nurture your child's mathematical abilities. Okay, so that was all for math. Now let's move on to our last subject briefly, which is Islamiat. इसको किफ़ायत ने नाम दिया है मेरी दुआ का हिस्सा अव्वल. इन क्लास नर्सरी यानी कि जूनियर इन्फेंट्स में हिस्सा अव्वल पढ़ाया जाएगा एंड इससे जो अगली क्लास है किंडरगार्टन और सीनियर इन्फेंट्स उसमें हिस्सा दोम पढ़ाया जाएगा. इट्स अ वंडरफुल बुक जिसमें बहुत सारे कलरिंग पेजेस हैं दुआस के साथ एंड थ्रू दिस द चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ सप्लिकेशंस और दुआस. इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मीनिंगफुल दुआज हैं जो कि बच्चा सीखता है और फिर अपनी डेली लाइफ में इनको इनकॉर्पोरेट करता है. व्हाट मेक्स दिस बुक इवन मोर एंगेजिंग इज़ दैट हर दुआ को भी बच्चा कलर कर सकता है और उसके साथ जो तस्वीर या इलस्ट्रेशन है वो ये डिपिक्ट कर रही है कि ये दुआ कब और कैसे पढ़नी है. This interactive feature will not only enhance the children's understanding बल्कि ये बच्चों को और ज़्यादा encourage करेगा कि वो actively participate करें इस learning process में. It's a fantastic book for children to engage with their faith and cultivate a strong connection with Allah. Book के आखिर में simple questions and answers हैं. इन questions के ज़रिए आप बच्चे को इस age में basic Islamic knowledge दे सकते हैं. These questions are not meant to be memorized, but just by reading them to children can open up some informative discussions. Okay, so that was all for Kifayat's junior infant level, also called as the class
नर्सरी। इसमें इस वीडियो में हमने 3 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, उर्दू, मैथ एंड इस्लामियात। इंग्लिश को हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट वी ऑलरेडी हैव a video on English in the description box down below and also on the channel. इसके अलावा if you guys still feel that you need some additional resources, then you guys can go and check out kifayatpublishers.com. Log in as parent and then there you will find a lot of free resources in the early years section. Lastly, if you guys are interested in buying these books, then Kifayat has made it really convenient by placing all of the books on Darsi. I'm going to share the link in the description box down below so you guys can go and check it out. In our next video, inshallah, we will be sharing our next class, which is the kindergarten class, also known as the Kifayat Senior Infant Level. Thank you so much for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.